a dream, dream is the beginning of everything. नमस्कार, मैं हूं नवभारत से अनुष्का आज आपके साथ। और नवभारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर वुमन कैंपेन। और मेरे साथ आज जुड़ रही है एक सुपर वुमन जिनका नाम है एलिजाबेथ वेंकटरमन। मैम, आई वेलकम यू। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Namaskar. Very happy to be here, Anushka, and would like to thank navabharat for this opportunity. My name is Elizabeth Venkataraman, and I look after marketing and alliances for Kotak Mahindra Bank. And I have been in BFSI now for 18 years. Before that, I was in advertising and a tech company, and that's my background. तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे ये सफर शुरू हुआ आपका। कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, क्योंकि मैं खुद भी उसी फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ। एक बेसिक क्या था आपके पास, क्या आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे एक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में जाना है और मैं इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। क्या हुआ मैम ऐसा? मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी का एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ हुआ था, एंड माय लव फॉर म्यूजिक, my love for paintings, so many things which were visual and audio, which enthralled me, and the way I would respond to them. I did think that there may be something that could give me a leverage in this field. वो सही है कि गलत है, well, time will continue to tell. लेकिन उसी में से मुझे ये आइडिया मिला कि मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए. Then of course I got the exposure to this field. ओके, तो मैम आप ये कहना चाहती हैं कि आपको क्रिएटिविटी से प्रेरणा मिली, आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंक करना होता है उससे आपको प्रेरणा मिली। तो मैम ऐसा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में काफी काफी चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली फॉर women. Women are considered the most intelligent and sincere beings in this industry. Why? Because of their creativity and their sincerity and their focus over everything. तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? क्या आपकी राय है, क्या आपका मत है? So Anushka, are you saying in corporate life or in this creative field? In this creative field, advertising field, marketing field में काफी ज्यादा women जो है काफी persuasive होती, convincing power उनका अच्छा होता है, उनको काफी इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है इस फील्ड में। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या आप सोचती हैं इस बारे में? Actually, इस फील्ड में I have seen a lot of women. Okay, if you look at the advertising industry per se, it's probably even equally represented, from the time I started my career. Because there is there is a lot of, I guess now that हम बात कर रहे हैं तो अभी समझ में आ रहा है कि it's actually right brain शायद is equally available on both sides, both genders, etc. But the challenges actually, जो challenges आते हैं वो सबको आते हैं, right? ये फील्ड में या दूसरे फील्ड में challenges है कि जब शादी हो जाए तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे जॉब के साथ, क्योंकि घर संभालना पड़ता है. जी बिल्कुल. The next time that comes is when you have a child, कि उसी के टाइम पे बहुत प्रेशर आ जाता है क्योंकि घर भी संभालना पड़ता है और बच्चे को भी. So these two moments in life challenge you the most, apart from the fact that all the normal challenges of making your name in the workplace, अपना नाम बनाना, अपना एक अलग नाम बनाना, वो सब भी जुड़े हुए हैं अपने करियर के साथ. और ये सब, when you see all of it together, what happens is that if you can get some level of balance, discipline and focus, which you naturally have, like you rightly said Anushka, कि हमारे पास पे होते ही है, उसको चैनलाइज करके ये पीरियड को क्रॉस करेंगे तो बहुत आसान हो जाती है. हाँ,
मैम मैं जैसे कि आप बोल रहे हैं कि काफी विमेन को प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी चीजें होती हैं जो इशू होते हैं, जैसे बच्चा हो गया, शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो परिवार की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते दूसरी फील्ड में भी विमेन कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके क्या मन में थॉट है कि हाँ, कि इसको ऐसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या ऐसे हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में? उस पे आपका क्या कहना है? बिकॉज यू आर एट अ सीनियर पोस्ट एट दिस लेवल, तो आपको भी ऐसी कोई परेशानियां आई ही होंगी, सीधी सी बात है, साफ बात है। तो आपने उनको कैसे टैकल किया? आप कैसे आगे बढ़े, उन सब चीजों को अपने साथ लेके आगे बढ़े? एक्चुअली ये हर औरत की जिंदगी में आएगी, और सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली जो आपको लेनी है, मांगनी जी भी है, होती है, कभी मिलती है, नहीं तो मांगना, यू नो, यू शुड जी आस्क, बिल्कुल। जी and बिल्कुल। you get it very या often, you get it. या That is one support from the family. Then your support system, your people who can really help you, your staff at home, who can really help you be much more focused and जी balanced in your life. That is a जी second thing. थर्ड, जी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो अभी दिखाई दे रही है कि after you have a child, self care and your own health. कभी कभार जी बच्चे, we only take care of the kid, we just neglect ourselves. I think जी very very important to have a lot of focus on you, and जी you being strong physically, mentally, और नरिशमेंट जो भी चाहिए वो हाँ उस पे भी जी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज I जी see these girls these days have a lot of their own physical and emotional challenges. So I think या is sub, and the workplace also having good relationships at these times, where you can, the famous lean in, जी as somebody said. So if you can actually make your whole ecosystem of family, your staff at home, your official environment, and take good care of yourself, जी then I think you can tide through ये period ठीक रहेगा. जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि फैमिली से सपोर्ट मांगना चाहिए, दे सपोर्ट, दे हेल्प यू। पर कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली की साइड से सपोर्ट मिलता नहीं है, इवन इफ दे आस्क फॉर इट। एंड समटाइम्स लाइक माय मदर, शी लेफ्ट हर जॉब, शी लेफ्ट हर एवरीथिंग टू रेज मी एंड माय ब्रदर। तो कहीं ना कहीं उनको एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो वैसे क्या उस चीज को क्या कैसे सुधार लाया जा सकता है समाज में? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूंगी इस चीज। I think that, see, even my mother, I come from a family of working women, three या generations actually. या My या grandmother was working, mother was working. So she या could not come and be with me because she had her own job. तो उनका भी अपना जॉब है, और वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट. तो या जब चाहिए, यू हैव टू टेक हर हेल्प, or and then also there is so many facilities today, whether it is daycare, whether it is good help at home, जो भी है आपको, finally you have to become atmanirbhar, self-reliant, and create a good strong support system, sometimes family, or otherwise everything that's available around you to make it work. यस यस यस। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रही कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू हैव टू बिकम दैट सपोर्ट सिस्टम। कई बार हमें नहीं मिलता, बट वी हैव टू बिकम दैट सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर एवरी फैमिली मेंबर। तो मैम, एज वी आर वर्किंग वुमेन, हमको एक और कॉन्वर्सेशन एक जो बन रही है बीच में, आजकल काफी प्रचलन में है ये कॉन्वर्सेशन, कि लड़कियों की एक मांग आ रही है, जो वर्किंग क्लास लेडीज है, लड़कियां हैं, उनकी ये मांग आ रही है कि उनको पीरियड लीव दी जाए, पेड पीरियड लीव दी जाए, भले ही वो 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, बट मिलनी चाहिए। तो उस पे आपका क्या कहना है? बिकॉज इट्स अ वुमेन रिलेटेड इश्यू। So, I think two working women should have a conversation on this.
I think some women have a lot of pain and they're in a lot of trouble in the first few days. Okay, जी and that जी we have seen over the years from your friends, from your your own mother, sister, whoever it is. You've seen it around you. जी जी And therefore, I think first 2 days, getting flexibility. I would yes more warrant work from home or flexibility on those 2 days is a good yeah thing. Because I think all of us have gone through some level of discomfort or जी pain, or all of that, and we are all aware that it can be tough. So yes I would vote, rather than leave, I would vote for flexibility on the first 2 days of the cycle. मैम जैसे कि आप बैंक के क्षेत्र में अभी कार्यरत हैं तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बैंक ने अभी कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे क्या खास कदम उठाए हैं जिनके बारे में आप हमको बताना चाहें? Uh, just that it is a very equal opportunity है. मैं तो 18 साल से हूँ और मुझे कभी भी नहीं लगी कि I am not getting or getting an opportunity because I am a woman or whatever it is. So it's very important to work in a place that makes you feel that it is an equal opportunity organization. That is the first thing I would say. The जी second is having all the policies which are required to maintain safety and for a lady, or that is also very much there. So I've always felt comfortable and continue to feel comfortable in my workplace. मैम जैसे कि आपने वर्क प्लेस पे सेफ फील करने की बात करी ऐसे कई वारदातें ऐसे कई केसेस आए दिन हमको सुनने में आते हैं कि वर्क प्लेस पे जो है महिलाओं के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी कैसे हम वर्क कल्चर को सुधार सकते हैं अगर आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है तो क्या बोलना चाहेंगी आप? Yes, I think that there should be organization की तरफ से it should be clear कि जी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. Okay, that is now I think it's become clear everywhere that जी these are boundaries not to be crossed. And I जी think जी as women we also have to draw our boundaries because जी that's individual. जी We also need to have our boundaries because जी you cannot then worry about the what happens. I हम्म, think those are the two things. It's what the organization does and जी and if it's very clear to everybody कि ये पार है. And if the individual is also cautious about ये पार है, I think many of these things can be minimized and it can become a good workplace. तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की साइड से जो है सारे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए एक बाउंड्री सेट होना चाहिए नाइट शिफ्ट में भी मैम लड़कियां काम करती हैं उनको नाइट शिफ्ट में भी जाना चाहिए जाना पड़ता है एंड जस्ट बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद देम क्या उनको टाइम का इशू होता है या जो भी तो उस पे क्या ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना चाहिए उन्हें कि एक लाइक मेजर ऑफ सेफ्टी भी फील हो उनको और नाइट शिफ्ट में वो इजीली काम भी कर पाए? Yeah, I think as a lady, I would say that I just need to feel safe traveling back and forth. उसका facility या हो तो या अच्छा रहेगा. जी और environment भी उधर should be secure. And like I said, like a day shift, it is just a different part of the time, uh, different part of the day. And if the boundaries again are clear to all and made unambiguous and very clear, then it's the same thing, except the traveling part. Night में थोड़ा pressure आ जाता है, and that should be should be taken care of. जी जी Yeah. तो मैम एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको पता ही होगा कि एज वुमेन वी सेव चाहे हम कमा रहे हो चाहे हम हाउस वाइफ हो चाहे हम किसी की दादी हो कुछ भी हो इवन अ लिटिल गर्ल शी ऑल्सो टेंड्स टू सेव तो कहीं ना कहीं आफ्टर डीमोनेटाइजेशन सब औरतों का ये शिकायत रहा जितना भी मेरे से बात हुई जितना भी मेरे से इंटरेक्शन हुआ तो उनकी यही शिकायत रही कि जो हमारी सेविंग्स थी वो सारी घुल गई
सारा चला गया बैंक में, तो वी कैन नॉट सेव एनीमोर. So what all tips you can give as a woman yourself working in bank sector कि कैसे सेविंग की जा सकती है, कैसे क्या सेव किया जा सकता है for women who are housewives or who tend to save a lot while even working also. So I think that what troubles me always is that the number of women holding bank accounts which are actively used is Yeah. always not a number that we like to see. So formal financial services में जितने women actively participate करते हैं वो अभी भी कम है in India despite all the advancements we see. तो वो change करना है. वो that is one thing is start early. हमारा एक program है junior banking program. So girls should be encouraged and taught, and all kids, and I'm including girls here. They should also be taught to start early, understand concepts of saving and spending, क्योंकि you know आज के ज़माने में expenditure भी है और सब कुछ online है, एक बटन से चीज़ घर पे भी आ जाते हैं, तो temptation भी ज़्यादा है. तो इसलिए I think और भी महत्वपूर्ण है कि सब लोग समझे कि ये एक चीज है जो पहले ही सिखाना चाहिए. So one is our junior program which really teaches you the basics, you know, gives you a debit card, makes you go to an ATM, you can, you know, experience withdrawal of money, all of that. So that is one. And then we have exclusively curated a program of a banking program for women. वो अपना program का नाम है Silk, Kotak Silk. So Kotak Silk is an exclusive program for women. We are going on improving, bringing many improvements to it. For example, locker पे discount है, maintenance charges waived है जब आप एक बच्चे का भी account खोलते हैं Silk के साथ. So things like that. We have a lot of and some there is some cashback on spending, lot of offers on grocery, gadgets, medicines, etc. तो ऐसा हमने एक we have created a program called Kotak Silk. So that also helps you, एक structure देता है कि एक बैंक अकाउंट से आप ये सब कुछ कर सकते हैं. So that is how I would say that you can really, the first step है कि आप एक बैंक अकाउंट खोलो और उसको यूज करो और डिजिटल बैंकिंग सीख लो, क्योंकि आपका ज्योग्राफी, आपको बच्चों को ड्रॉप करना है, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर पे बैठ के भी आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी आप मोबाइल बैंकिंग यूज करके टर्म डिपॉजिट कर सकते हो, आपको दूध वाला को पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, सब कुछ बैंक ऑफ अनुष्का तिवारी है आज. So you have your own bank and you can really do everything. आपके बुट्टी में बैंक है. तो मैम जैसा कि कोटक महिंद्रा के द्वारा से मुझे पता चला कि आप एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वुमेन के लिए, तो वो क्या कैंपेन है, जरा आप बताएंगे मुझे? हम एक स्कल्पचर अनवेल करने वाले हैं 7 मार्च को साइबर सिटी गुड़गांव, दिल्ली, जिधर इतने ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं नारियों का, जितने women are there working in that place. It's called, the sculpture is called Meri Udan. It is a sculpture that represents the Indian woman, and we are celebrating her becoming Atmanirbhar. So that is what we are doing. It is a sculpture which pays tribute. Hope all of you see it and celebrate with us. तो मैम मैं चाहूंगी कि आप नव भारत के दर्शकों को क्या एक लास्ट मैसेज, हमारे नव भारत की नारी दर्शकों को क्या मैसेज एक देना चाहेंगी? मैं बोलूंगी कि जब अपने घर में बेटी हो, बेटे को भी बेटी हो, उसको एक सपना दिखाए और उसको वो सपनों से सब कुछ जुड़ा है. Show her a dream. And once she has the dream, I want to become an astronaut, or I want to become a chemical engineer, or I want to become a fashion designer, then that dream is the beginning of everything. She has an independent personal dream, and that makes her participate effectively in the education system, in the vocation
system in everything, and then she becomes she sets herself up, and you have also helped the girl with her dream to become somebody in the world. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया एलिजाबेथ मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने का और आपका समय देने का। मैं चाहूंगी कि नवभारत के दर्शकों को की तरफ से भी मैं आपको एक हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूंगी। और बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर करी हमसे, काफी यूजफुल टिप्स जो है हमसे आपने शेयर करी। और हम यूं ही इस तरह मिलते रहेंगे एक और सुपर वुमन के साथ। स्टे ट्यून्ड टू नव भारत। नमस्कार।